अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शेख सदीक ने रिपब्लिकन पार्टी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। रिपब्लिकन पार्टी के हामियों और उम्मीदवारों ने कहा कि इस इलेक्शन में भी डोनाल्ड ट्रंप ही सदर मुंतखब होंगे। अहवाल फजल खालिक की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सदारती चुनाव कल होगा, जिसके लिए अर्ली वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और तारीख में पहली बार 70 मिलियन से जायद वोटिंग हो चुकी है। इंतखाबी दंगल से कबल रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तानी निजात अमेरिकन बिजनेसमैन शेख सिद्दीक ने रिपब्लिकन्स के एहसास में तकरीब सजाई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान शेख सिद्दीक का कहना था कि इनकी हिमायत और वोट हमेशा रिपब्लिकन्स के लिए ही रहे हैं। आइंदा इस इलेक्शन में भी रिपब्लिकन्स की जीत होगी। I am with Governor Bob McDonnell. He's our leader and the newly elected Republican Party chairman of the state of Virginia. He's going to bring the people together. He loves diversity. He's going to make the difference in the Republican Party. He's going to break all the past record in the last 200 years. And our governor, I am very, very sincere about him. He is such a great human being. You know, the word human being says everything else. I can say a million words and say one word, human being. That's what I'm trying to copy these leaders. साबिक गवर्नर बॉब मैकडोनल्ड और जॉर्ज एलन ने कहा कि अमेरिका की तरक्की में रिपब्लिकन्स का अहम किरदार रहा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वोटर्स खुद समझदार हैं और जानते हैं कि इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ट्रंप ही सबसे बेहतर ऑप्शन हैं। Great leadership for the Pakistani American business community. You've invited me so many times to organizations, and the thing that I love about Pakistani businessmen is they're all part of this great American dream story that we call it, where people can come to our country, enjoy the freedom and opportunity, work hard, not make excuses, take advantage of opportunities, be honest. So many Pakistani Americans here tonight. I would urge all of you out there who are watching this broadcast, who reside in the Commonwealth of Virginia, who vote in our wonderful state, please vote. If not on election day, go early and vote. Beat the rush. But nonetheless, we value you very highly and thank you for the privilege of living, working and serving at your side. इस मौके पर शुरका ने भी रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत का भरपूर ऐलान करते हुए कहा कि वो बेहद लगाव रखते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन ही वो पार्टी है जो अमेरिकन कम्युनिटी के मसाइल को समझती है, इन्हें सही समत में ले जाने के लिए मस्बत रोल अदा कर रही है। Incredible importance of getting out to vote, the importance of issues that are important to the Pakistani community, to understand too the things that Congress needs to do to make sure that we are helping. This is a great time to talk to people in person, to understand their thoughts and concerns, to ask for their vote. I think it's incredibly important to ask for their vote, to encourage them to get out to vote. Well, because they look after the people. And the people are what is all about this country. It's not the people in office. They are serving us who pay the taxes, who work hard, and I commend them for what they do. But if they're not working for us, they're working for themselves, and that is what the Democratic Party has started to do. Well, I guess you can tell I'm a banker. I'm a big Republican, big Trump supporter, and I think that Nancy Pelosi, the leader of the Democratic Party, is probably more worried about her hair or what color mask that she wears than the American people. तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नईम भट्ट और मुवाहिद हुसैन और दीगर ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को अमरीकी सियासत में महदूद नहीं होना चाहिए। इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी जैसे तमाम मसाइल को सियासी तौर पर मुस्तहकम होकर ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी को चाहिए कि वो हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो। सिर्फ एक जगह अपने आप को महदूद कर देना अच्छी बात नहीं होती, ताकि हमारे लिए मुख्तलिफ दरवाजे खुले, हमारे बच्चों के लिए मुख्तलिफ दरवाजे खुले और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। Today I would say the Sheikh Saab, who's the pillar of the Pakistani American community, did a phenomenal job. Not only he had two excellent governors in the US. I think it's very important that our people who are educated, who are young, should develop the confidence, should connect with the American policymakers, should connect with the civil society, and present their point of view. Issue of Kashmir and issue of Islamophobia. Look at what has happened in France. It's very important
that the Muslim community today is the only community which is singled out for insults in the West. And I think it's very important that the Muslim community should empower itself, should develop confidence, should counter attempts to cast a negative image about Islam, because Islamic civilization has played a critical role in the development of Western civilization. All Pakistani this year very, very hard working for both parties, and they are coming out with the children and families to help to have a vote. शुरका और रिपब्लिकन्स के हामियों का कहना है कि कल वोटिंग होगी और फिर नताइज आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रियासत वर्जीनिया के वोटर्स ने अपना फैसला डोनाल्ड ट्रंप के हक में सुना दिया। फजले खालिक, वॉइस ऑफ साउथ एशिया, वर्जीनिया।